Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक जयंतो दास। जयंतो नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम जयंतो। थैंक्स राजेश। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेक। Key domestic stocks witnessed modest gains. Sensex closes above the 59,600 mark. Nifty settles near 17,600 level. The rupee strengthens 8 paise, closes at 82 rupees and 16 paise against the US dollar, and Brent crude hover around $82.06 per barrel. मामूली बढ़त के साथ बंद हुए घरेलू शेयर बाजार। सेंसेक्स 59,600 अंक के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 17,600 के नजदीक आकर हुआ बंद। $1 की तुलना में रुपया हुआ 8 पैसे मजबूत, ₹82.16 के स्तर पर पहुंचा। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $82.06 प्रति बैरल पर आई। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि कुल मिलाकर फ्लैटिश टोन ही देखने को मिला। सेंसेक्स 59,600 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,600 के नजदीक बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से निवेशकों को मिला जुला संकेत आज मिला है। इन सब खबरों के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 65 अंक यानी 0.11% की बढ़त लेकर 59,632 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 6 अंक यानी 0.03% लाभ के साथ 17,624 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो मिड कैप इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की वृद्धि हुई। The key domestic indices today ended flat amid volatility. The BSE Sensex closed above the 59,600 mark, while the NSE Nifty settled near the 17,600 level. Both stocks were up amid mixed global cues. The Sensex added 65 points or 0.11% to finish at 59,632. The Nifty at the National Stock Exchange also rose 6 points or 0.03% to settle at 17,624. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended almost flat and the small-cap index settled 0.10% up. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 18 firms rose while 12 fell. Among the gainers, Tata Motors rose 1.7%, NTPC gained 1.35%, and Asian Paints added 1.2%. On the other hand, Hindustan Unilever declined 1.2% and Sun Pharma slipped 0.8%. Infosys fell 0.7%. In sectoral indices at BSE, 12 sectors logged gains while 8 witnessed losses. Service sector surged 0.9%, utilities gained 0.85%, and telecommunications sector rose 0.8%. On the other side, healthcare declined 0.8%, realty sector fell 0.5%. Commodities and metal sectors both slipped 0.4% each. The overall market breadth was positive as shares of 1,911 companies rose, while those of 1,587 companies fell.
A total of 133 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 8 पैसे मजबूत हुआ, 82 रुपए 16 पैसे के स्तर पर पहुंच गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.14% कमजोरी के साथ 101.83 पर चल रहा था। तो बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। किन अर्थों में ले रहे कारोबार को? देखिए, मोटी तौर से पिछले हफ्ते के दौरान जब मार्केट में थोड़ा बहुत 60,000 के ऊपर का अंक था सेंसेक्स का, तो उस वक्त भी हम ये कहे थे कि भाई इस वक्त कंसोलिडेटेड रेंज में मार्केट रहेगा, और उसी का ही छवि हम देख पा रहे हैं, जहाँ पे मार्केट में गिरावट काफी हुए थे और उसके बाद अब थोड़ा बहुत 59,000 लेवल्स में आके मार्केट रुके हुए। दो इसमें हम लोग को दिशा निर्देश इस वक्त मार्केट में, अगर आप सही रूप से दिशा निर्देशों को कह पाए, तो ये है कि पहले जो अंक ये है कि विदेशी बाजारों में जिस तरह का ट्रेंड बना हुआ है, उस तरह का ट्रेंड का छवि हमारा घरेलू बाजार में थोड़ा बहुत है। हालांकि कुछ दिन उस ट्रेंड को ये उल्टा भी करके सेंसेक्स में अलग दौर चलता है। और दूसरी मुद्दे ये है कि आईटी क्षेत्र का जो नतीजे आए हुए हैं, वो नतीजे काफी भारी पड़ा स्टॉक मार्केट्स के ऊपर। सिर्फ क्षेत्र विशेष नहीं, ओवरऑल एक मार्केट्स में एक स्लगिशनेस जिस तरह से छवि आया हुआ है, उस स्लगिशनेस से इस वक्त निकल पाना मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन रेंज बाउंड मार्केट है, मार्केट में गिरावट का उस तरह का कोई प्रोनाउंस्ड सिचुएशन नहीं है। मैं मानता हूँ ये एक अच्छी खबर है इस वक्त मार्केट के लिए। और साथ में ये भी हमें समझना चाहिए कि विदेशी बाजारों में, खास करके यूएस में, जो कॉर्पोरेट नतीजा आ रहा है वो भी उतना उत्साहजनक नहीं है। मॉर्गन स्टैनले विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स, उसका भी रिजल्ट्स में प्रॉफिट में काफी गिरावट आया हुआ है। हमारे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का भी उम्मीदें उतना जितना छवि लोग सोच रहे थे उस तरह का छवि के साथ नहीं आया हुआ है। तो ये भी मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं एक जिसको बोलते हैं मूड बेरिंग जो होता है, जो इन्वेस्टर्स है, निवेशकों के ऊपर बेशक एक प्रभाव डाल रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग रेंज बाउंड मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ भारत में नहीं, अगर आप एशियन मार्केट भी देखेंगे वहां पर भी एक बहुत नैरो रेंज में मार्केट चल रहा है। और मैं मानता हूं कि जब तक कॉर्पोरेट रिजल्ट्स का पूरा छवि इस मंथ का एंड तक जब तक नहीं आ जाए, मार्केट में इस तरह का रेंज बाउंड बेशक रहेंगे, क्योंकि ट्रिगर्स नहीं है मार्केट में, ना ग्रोथ ट्रिगर्स है ना फॉल का ट्रिगर्स है। तो रेंज बाउंड मार्केट इस वक्त होना भी, जैसे मैंने शुरुआत में थोड़ी देर पहले कहा, काफी अच्छा है, एंड दैट्स व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू। Okay, Gento, the ongoing Q4 earnings season is the focus area of the market today. Do you think it has a negative bias, and as you also mentioned about the IT sector, due to the lower than anticipated initial results announced in the IT sector? Yes, I mean, there is absolutely no disagreement of the fact that some sectors would be really creating a heavy bias on the market at this point of time. And of course, that is being led by IT. And if we go back a few months away, we have at length discussed in the studios in November and December when the job losses were getting triggered off in huge numbers, in thousands. And we said that there is a situation whereby in the mid of the next calendar year, which is June, July of this particular year, we would be seeing dark clouds overhanging the growth sector, specifically related to IT. And this is exactly what has happened. I mean, not only the results have come in to prove and emphasize the fact that things are not really that looking up, but in addition to that, there has been successive job losses also happening continuously till now. Maybe the numbers are not drawing headlines, but across the IT sector there has been job losses, and the job losses continue. So what we need to understand is, do we have in the next 2 quarters some decent growth numbers that would overpower these job losses and bounce back in the IT sector? I don't think we absolutely have that trigger available right now. And as a result of which, we do see these range-bound markets where what typically happens every time the census is hitting 56, 57, 58,000 levels, there are people who are coming in and doing value buying, and the census is moving upwards. But then there is a resistance to which, this value buying happens. And people are, again stuck up in the 60,000, 61,000 levels.
जैन, तो अभी आपने चर्चा की बैंकिंग सेक्टर के बारे में और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया भर के बैंकिंग सेक्टर की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि उनके जो परिणाम आ रहे हैं वो वैसे नहीं आ रहे जो कि उम्मीद की जा रही थी। क्या ब्याज दर में जो लगातार बढ़ोतरी की गई है दुनिया भर में, उससे बैंकों का मार्जिन प्रभावित हुआ है? दूसरी ओर यदि हम घरेलू यानी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी जो लोन लेने वाला सेगमेंट है वो घटा है, ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो क्या ये चिकन एंड एग स्टोरी है और इसमें मैं मानता हूँ कि बेशक एक ऐसी स्थिति लंबा ब्याज दर का वृद्धि के बाद एक ऐसी स्थिति में हम आके पहुंचे हैं यहाँ पे जहाँ पे टिपिकली जब साइकिल होता है 3 साल का, तो साइकिल का पीक जो है जहाँ पे ब्याज दर हम मान रहे थे कि सबसे ज्यादा ऊंचाई तक रहेंगे, उसके बाद एक गिरावट का सिलसिला धीरे धीरे नजर आएंगे, वो हुआ नहीं अभी तक। तो ओवरकमिंग द पीक इज नाउ मेजर चैलेंज। तो जब तक वो पीक ओवरकम करके मार्केट में एक ओवरऑल मूड ना बने कि चलिए जी ये है ब्याज दर का सबसे पीक लेवल, अब धीरे धीरे यहाँ से कम होना शुरू होंगे, तो मार्केट में इमीडिएटली ट्रिगर मिलता है। तो वो ट्रिगर कहीं पे नजर नहीं आ रहा। और जैसे मैंने कहा आप लोगों का साथ 2 हफ्ते पहले जब हम प्रोग्राम किए थे, अलग से उल्लेख भी किए थे कि फेड भी उम्मीद कर रहे थे कि भाई अप्रैल मई तक ये ट्रिगर हम पहुंच जाएंगे और वो वहां से ऊंचाई से धीरे धीरे फिर से ओवरऑल मार्केट का लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट का एक अलग से इंडिकेशन भी आएगा, मार्केट को संकेत भी मिलेंगे। तो फेड ने भी चेतावनी दी है कि वो उतना जल्दी होने वाला नहीं है जो हम उम्मीद कर रहे थे। और उस वजह से जो ट्रिगर का जो कमी है ये प्रभाव डाले है नॉट ओनली इन कंपनीज का जो कॉर्पोरेट रिजल्ट है बट इवन बैंकिंग क्षेत्र में जो बैंकिंग रिजल्ट है। लेकिन साथ में मैं एक कैवियर ये भी डालना चाहूंगा, हमारा घरेलू बाजार में बैंकिंग इंडेक्स जो है वो सेंसेक्स या निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले दौरान। तो दैट इज समथिंग गुड टू चीयर फॉर ऑल इन टर्म्स ऑफ जस्ट नंबर्स। लेकिन ये जरूर है, आपने जो शुरुआत में कहा कि हाँ भाई ब्याज दर का वजह से मार्केट में अलग से जो नरमी आया हुआ है, जो लोन ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ है, उसके ऊपर बेशक इफेक्ट होता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका सीधा नतीजा हम लोग देखे HDFC बैंक जो निजी क्षेत्र बैंक में वन ऑफ द लार्जेस्ट है एंड इट्स अ बेलवेदर कंपनी, सेंसेक्स से भी स्टॉक है वो। तो ये सारी चीजों का प्रभाव बेशक मार्केट में आया हुआ है। और साथ में अगर हम वापस आते हैं, हमारा खुद का जो निवेशक है, जो हमारा ज्यादातर श्रोताओं को मतलब मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ श्रोताओं खुदरा निवेशक, आप हमारा जैसा खुदरा निवेशक है, तो उनका ऊपर बात यह आता है कि इस वक्त हम लोग को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, रुके रहना चाहिए मार्केट को देखते हुए। तो मैं मानता हूं कि इस वक्त अगर आपका पास 3 से 4 साल का अवधि है निवेशों का, अगर आप सोचते हैं कि हाँ भाई अभी जो भी मैं पूंजी लगाऊंगा इस पूंजी को मैं अगले 3 से 4 साल तक उस पूंजी में मेरे को छूने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू चेरी पिक स्टॉक्स। और उसमें नॉट ओनली बैंकिंग स्टॉक्स, आप बेशक आईटी स्टॉक्स पसंद करिए, जो बेलवेदर स्टॉक्स है आईटी में 3, 4, 5 जो कंपनीज है लीड में, काफी सस्ते में इस वक्त उपलब्ध हो रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से कुछ और नरमी हो, लेकिन लोएस्ट लेवल तो कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है जी। हम टॉप मोस्ट लेवल जो है वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो बेशक ना इंतजार करके इस दरों में जो आपको अच्छे आईटी स्टॉक्स आपको जो लग रहा है कि मैं अगले 3-4 साल तक इस स्टॉक्स को मैं पकड़ के बैठ सकता हूँ, तो दिस इज एन एक्सीलेंट टाइम टू एंटर। खास करके 30%, 40% टॉप स्टॉक्स में छूट है इस वक्त। तो अगर आप चाहे, और जैसे मैंने कहा कि इस उम्मीद में ना निवेश करें कि आज मैं खरीद के इसमें दिवाली का टाइम निकल जाऊंगा या सितंबर टाइम, नहीं। अगर आपके पास 3 साल का इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पैसा को पकड़ के रखने के लिए, तो बेझिझक आप इसमें एंटर कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन टू बाय। So which sectors would you recommend to cherry pick? Market, whatever the market state is, you can always buy smartly and sell smartly. Okay. Jenso, the global market today has been unsupportive due to the expectation of another rate hike, which you also talked about a while back, and mixed earnings released in the US. Now, given the cautious global sentiment and to quote you, lack of trigger today in the markets, do you think FIIs will continue to withdraw in the coming weeks and hamper the trend that the market was beginning to gain? See, FIIs have been net sellers, I believe, this week, if my figures are correct. I don't have the latest figures as of today, but I think this week, till Thursday, FIIs have been net sellers in the market almost on a daily basis.
And I do believe this persistent behavioral, attitude, should I say, or reaction to the markets, it will remain so, because they also need to realign their funds on a very short notice across markets globally, right from your Asian markets to the European markets to the US markets. And they have to keep on shifting and shuffling funds to ensure that within falling markets, they have to, reshuffle and realign their investments. So I'll not be surprised if they continuously keep on selling their stocks and offload their stocks and become net sellers in the Indian domestic market. So from FIIs, let's go to the DIIs. Yeah. They've been buying equities in the first 3 months of 2023. They have pumped in 832 billion rupees. And this is the data which has been shared by NSE. This is almost equal to the total inflows that we saw in 2021. So do you think that they will be able to sustain this participation? Well, that's a difficult call on behalf of what the DIs intend to do in the next 9 months of this calendar year. But what I do believe is that particular investment has led to the markets not crashing, if you look at it from that perspective. And I think that has kept the hope and some of the fundamentals of good stocks alive. I mean, the prices at which some of the stocks are available today as we speak are certainly much lower than what they deserve to be. But then that's how markets are. So let's not go into that zone. But coming back to your initial question about DIIs and their investments and how they've been getting investors in this overall market, I do believe that has been a consistent factor, whereby the growth story of the market broadly has been, perceived to be on the correct path. Okay. And what about the domestic story? Do you think it remains promising? There are global irritants which will continue to persist. Do you think this bout of volatility in the market will continue for some time or intermittently? I had access to some figures. Okay. Major international bodies, and you have accumulated in terms of where Indian market story is headed. I think this year particularly in terms of growth, it would lead the overall market, despite the size of our economy and whatever. So it will lead globally in terms of growth. So coming back to your question, it answers the fact that the India growth story remains untouched at this point of time. So it will continue. It will not be on a boom stage where everything is turning into gold or things like that. But we have to understand that within the domestic collateral and the international collaterals, which we typically call, would be the push and pull measures of various global announcements, political announcements, economic announcements, and even climate issues and all this stuff put together. I think the broad growth story remains that India's firm growth track remains. Whether we are doing it at 5.5% or we are doing it at 9% is something which the global growth recovery or the global growth crash would, veer India into. But the India growth story remains. There is absolutely no doubt on that. जय, तो यहाँ पर हमारे जो आम श्रोता हैं उनके कह लें कि हित में हम ये समझना चाहेंगे कि आपने 3 साल की बात कही कि 3 साल की अवधि लेकर जो चले तो उसके लिए तो निश्चित है कि मुनाफा होना सुनिश्चित है, लेकिन छोटी सी यदि हम अवधि को कम कर लें, अवधि को थोड़ा सा कम करें, 1 साल से 2 साल के बीच की अवधि को रखें और जो पूरी दुनिया की आर्थिक दशा है और जो भारत की विकास गाथा है कि भारत अपेक्षाकृत दुनिया में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा, तो 1 साल से 2 साल की अवधि में कौन सा ऐसा 3 सेक्टर आपको लग रहा है कि जिसमें मुनाफा अपेक्षाकृत बेहतर मिल पाएगा? मनोज, उसमें मैं बेशक वापस आऊंगा जवाब में, लेकिन सिंस आपने अवधि कम कर लिया जी हाँ बारे में बात करें, 19 महीना का अगर हम बात करें, जहाँ पे आपका 1 साल और 2 साल का बैंक का बीच में कवर हो जाता है जी, आपका पास 9% रिटर्न इस वक्त बैंक एफडीज में मिल रहा है। जी 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 जी, दिस इज एन एक्सेलेंट रिटर्न। और मैं नहीं मानता हूँ इस वक्त कोई भी स्टॉक तक में हम दावे का साथ कह सकते हैं आपको 9% अगले 14 महीने में मिल सकता है, 20% मिल सकता है कोई स्टॉक विशेष में, किसी को नहीं पता किस तरफ दिशा लेगा। बिल्कुल, आपको 9% एश्योर्ड रिटर्न बैंक एफडीज से मिल रहा है, तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बेट। श्रोताओं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है आपका जयंतो जी की ओर से कि यदि आप सुनिश्चित लाभ चाहते हैं और छोटी अवधि में 1 से 2 साल की अवधि के लिए चाहते हैं, तो बैंकों में जमा करके जो ब्याज दर आपको मिल रहा है अपनी एफडी पर, वह अभी बेहद आकर्षक है।
Gento, I just want to understand the investor's mindset when I tell you that the investments through the SIP route had hit a record high of 14,276 crore rupees in March alone. So what does it say? Is the investor positive about the things that are happening? They're ignoring about certain facts, or they're just simply global facts and just looking at India-centric approach? Well, I think typically let's not go to whether it's an India-centric approach or not. But the fact that SIP has been increased in volumes speak of, why people still believe that this is a good time to enter. And SIP route might not be a huge return section to enter in, but one of the safest way to enter your markets, because where your a mutual fund manager is trying to rehash, realign and reallocate your in the manner best possible in this falling market. Because in markets which are growing fast and markets which are giving huge recoveries in short span of time, a lot of retail investors are clever and smart enough to identify stocks, go in and sell out in 6 months. But in falling markets, I guess most of our basic rudimentary principles of investments get challenged, and that's why you need the help of experts. Now, SIP is one route which we have been constantly focusing on and saying that yes, that is the way to go through if you have smaller funds over a longer period or million over period to go through, because someone else is doing the thinking. But choose your SIP funds very carefully, because that too, obviously, all SIP funds, the famous mutual fund disclaimer which is there on almost everywhere. A fund performance depends on who the fund manager is and how he's taking a call. So try to understand the stocks he's investing in. But if not in safe hands, at least you can believe the fact that the money would be much more utilized in a better manner, because it is regulated, it has got experts, and in falling markets when you are clueless where to do and what to do with your money and which stocks to invest in, SIP is one route where you go in and then you get the fruits of a growing stock market in the next 6 months to 1 year very fast. आइए खबरों को विस्तार दें, चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज मिला जुला रुख देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 सूचकांक निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से 0.18% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हिंगसेंग में 0.14% की वृद्धि हुई। उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% लुढ़क गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की कमी आई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.1% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक नरमी देखी जा रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.8% घाटे में चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.5% की गिरावट थी, जबकि लंदन का फुट्सी भी 0.1% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। The US stocks closed mostly flat yesterday following mixed corporate earnings from major US companies. The dollar was on the back foot as investors remained cautious ahead of an expected 25 basis point hike in interest rates by the US Federal Reserve next month. The S&P 500 lost 0.01% and the Dow Jones Industrial Average fell 0.23%, while the Nasdaq Composite gained 0.03%. Gento, what is your expectation? Generally, everyone is believing Fed is not going to go soft anymore, at least not in this year, and therefore the volatility will continue to persist. Well, let me tell you of a particular Snow White story which people were expecting to happen, if I will tell you. When the Fed started increasing the interest rate, across the board, all Wall Street smart analysts in their dark suits had almost written in everywhere and were giving interviews that by May and June of the calendar year 2023, the rate of interest would start sliding down and the painstaking process would remain till there. So what happened? There was a strong build-up among corporates, Wall Street stockbrokers, and overall investors, assuming the fact that the whole rate hike increase will happen till May and then it starts falling. Fed never spoke on that. However, of late, when specifically the last 8 weeks, in numerous occasions, through not only the Fed platform, through also parallel platforms,
When the story started getting clear that Fed is going to remain hawkish and these things are not going off that soon as it has been wished, the whole fairy tale expectations blew away in the wind. And as a result of which, we have these facts that, with, how the banks fell and things like that, those stories. But personally, if you ask me, I think this story of high rate increase would remain at least till October, November, if not more. Okay. It will be good if we have by July, August, some directives on where the rate hike would be going, so that can at least assuage the markets to some extent. Okay. Moving on, the oil prices fell to the lowest in about 3 weeks today, depressed by rate hike expectations which outweighed lower U.S. crude stocks. In intraday trade, Brent crude was trading at around $82.06 per barrel, while Texas Intermediate WTI crude price was at $78.04 per barrel when reports last came in. Generally, the oil prices were down today as the US dollar strengthened on rate hike expectations, and after recent economic data from the US and China did not do enough to encourage expectations. In this scenario, how do you foresee the movement of oil prices? Well, I don't think it will be extremely sticky and pushy upward. The chances of it going down further from here will be much more prevalent. They are trying to find windows and nooks to have an opportunity to see whether the prices can be pushed up. But unfortunately, if not the doomsday, the gloomy days remain. So the gloomy days, the corporate earnings remain, and for the summer, I don't think it will be a really bright summer for the oil prices at this point of time. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक आज 114 रुपए बढ़कर 60,402 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। उधर मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 191 रुपए बढ़त के साथ 75,663 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर ध्यान दें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार में सोने का मूल्य मजबूत होकर $2,014.70 प्रति औंस पर चल रहा था, जबकि चांदी मजबूती के साथ $25.68 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। जैंतु सोने चांदी के मूल्यों में लगातार खासतौर से सोने में हम तेजी का रुख देख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी इसके क्या आसार है? Well, I am quite bullish on gold, and I have been bullish even when gold was at 45,000 rupees level last year. I do believe it's another of the good options. आपने 12, 15, 16 महीने का बात कर रहे थे, 1 या 2 साल का अवधि तक। जी। बेशक सोने में आप पैसा लगा सकते हैं अगर आपका अगले साल खास करके घर में कोई शादी हो जहाँ पे सोने का रिक्वायरमेंट है, कमिटमेंट है, तो दिस इज अ गुड टाइम। ये भी एक इन्वेस्टमेंट है आपको, और मैं मानता हूँ इसमें आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है जहाँ पे इस ट्रेंड में सोने का जो चल रहा था। यहाँ पर एक छोटा सा और सवाल कि सोने में यदि निवेश करना हो तो कौन सा माध्यम बेहतर रहेगा? फिजिकल गोल्ड लेना या जो ईटीएफ होते हैं उनमें लेना, या बॉन्ड है वहां जाना? किस रूप में सोने में निवेश करना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि हर एक इंसान को अपना रुचि के हिसाब से और अपना जरूरत के हिसाब से सोने, लोग खास करके भारत में शादी या कोई अलग सा फेस्टिवल वो ध्यान रखते हुए लोग खरीदते हैं। जी। ज्वेलरी के माध्यम अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेशक अगर आपको 2-3 साल के अंदर घर में शादी हो। जी। एज अ प्योर इन्वेस्टमेंट फॉर्म में अगर आप चाहते हो तो ईटीएफ इज वंस अगेन इक्वली अ गुड ऑप्शन। जी। निर्भर करता है आपका रुचि क्या है, बिकॉज आप ज्वेलरी में आते हैं तो आपका करीबन 8 से लेकर 20-22% तक आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट जाता है मेकिंग चार्ज में। जी। होल्डिंग कॉस्ट। बस यही जैन, तो हम आपको समय के अभाव में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Jayanta. And before we close, the headlines once again. Key domestic stocks witnessed modest gains. Sensex closes above the 59,600 mark. Nifty settles near 17,600 level. The rupee strengthens 8 paise, closes at 82 rupees and 16 paise against the US dollar, and Brent crude hover around $82.06 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra. Market Mantra.